नमस्कार, स्वागतम। हम आप सबका इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी द्वारा प्रारंभ की गई आयुष समृद्धि ज्ञान गंगा यात्रा में स्वागत करते हैं। नमन करते हैं आप लोगों के ज्ञान को, अनुभव को और कृपा को जो आपने हमारा शॉर्ट टर्म इनविटेशन स्वीकार करके की। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप जैसे विद्वान महान वक्ताओं ने इस यात्रा को आज 700 के करीब पहुंचने में मदद की है। पिछले साल हम 400 पे थे मई में, और हमें खुशी है कि हम इन 11 महीनों में 300 वेबिनार किए हैं जो हर टॉपिक पर होती हैं, YouTube पर लाइव रहती हैं, बाद में रिकॉर्डेड रहती हैं। आप लिंक शेयर कर सकते हैं, इसमें भी आप लोगों को जोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ आधुनिक तकनीक की दुर्भाग्यशाली घटनाओं को देखते हुए, जिसे जूम बॉम्बार्डिंग कहते हैं, हम लोगों ने अनवांटेड आदमियों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कम किया। हर वेबिनार का सर्टिफिकेट अवेलेबल है, एज एन ऑडियंस तो अवेलेबल है ही, पार्टिसिपेंट्स के रूप में अवेलेबल है, और हम अपने स्पीकर्स को स्पीकर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आप आंख बंद करके कोई भी विषय सोच सकते हैं, हमें विश्वास है कि हमने वो पिछले 3 साल में निश्चित उस पर वेबिनार की होगी। हम हर दिन सेलिब्रेट करते हैं, 3-3 विषय हो तो 3-3 वेबिनार होती हैं। आज भी वुमेन्स वेलनेस डे है, आज डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेस भी है, और पिछले 2 दिन पहले ओवर विजिट के कारण हम टेलीफोन डे मनाना भूल गए थे, मतलब एक बात रह गया था, उसको आज हम टेली डायग्नोसिस एंड टेली एजुकेशन इस सब्जेक्ट पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा हर विषय आयुर्वेद, आयुष और हेल्थ से संबंधित रहता है। कृपा कर जो नए लोग हैं, मैं प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रसशास्त्र वैशेषिक कल्पना, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आपका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रोफेसर वीके अग्निहोत्री सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। मैं डॉक्टर ई शर्मा जी का मॉरिशस से स्वागत करता हूं। वेलकम डॉक्टर ई शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। थैंक यू सर। डॉक्टर लीना को देखकर बहुत अच्छा लगा हरियाणा डेज के बाद में, इतने वर्षों के बाद। नमस्कार मैम। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन सर। वह जैसे कल मैंने कहा था ना, ये आयुर्वेद का महाकुंभ है, यहाँ सब बिछड़े मिलते हैं। 3 साल से हम लोग ये प्लेटफॉर्म, बड़े दिनों बाद, 20-20, 30 साल बाद आप विद्वान लोग। शर्मा जी कैसे हैं? बस सर बिल्कुल ठीक है सर, ऑल फाइन सर। पहचाना? अरे मैं सर वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। डॉक्टर निशांत शुक्ला। हाँ जी। अरे सर कैसे हैं आप? अब दिख रहा है। बस फाइन। पंजाब में हम साथ में थे। जी बिल्कुल सर, मुझे याद आया। आप आए थे, बिल्कुल सर। क्या बात है। वेलकम जी। तो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रोफेसर वीके अग्निहोत्री सर। हरिओम। आदरणीय वीके अग्निहोत्री सर। मैं तो यार इसमें कार में आ गया हूँ। चलिए एक बार फॉर्मल वेलकम तो बनता है सर। वो नहीं है अपने। नमस्कार। फॉर्मल वेलकम बनता है, बाकी हम हैं सर, काहे चिंता करते। हाँ नहीं, मैं फॉर्मल वेलकम नहीं, मैं बिल्कुल अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से इनफॉर्मली हम आपको बाय हार्ट सबको आज के वेबिनार के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं उनको इनवाइट भी करते हैं, और उनसे बहुत कुछ नया, जो लोग हमारे गेस्ट स्पीकर, डिस्ट्रिक्ट स्पीकर जो आज पहली बार जुड़े हैं, स्पेशली प्रोफेसर लीना जी, और उन सब लोगों से बहुत अच्छा मिलेगा। और
जहाँ तक प्रोफेसर नीरू नथानी जी का सवाल है, वो बहुत बड़ी चेयर को इस समय रिप्रेजेंट कर रहे आप कार में कहाँ जा रहे प्रोफेसर, और हमारे मैं जरा करखल तक जा रहा हूँ 5 किलोमीटर पर, वहां पर फिर व्यवस्थित हो जाऊंगा। नेटवर्क नहीं आएगा ना। शर्मा जी का स्वागत है, प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी का स्वागत है, और हमारे साथी प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी का स्वागत। और हमें आशा है कि पूरा अपना अभी मैनेज कर लेंगे। मैं अभी मिलता हूँ 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद। थैंक यू सर, वेलकम, स्वागत है। आज हमारे सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हमें जी स्वागत है। ओवर टू पवन शर्मा जी। आदरणीय प्रोफेसर नीरू नथानी जी का स्वागत करता हूं, जो प्रोफेसर एंड फॉर्मर हेड है डिपार्टमेंट ऑफ स्वास्थ्य व्रत IMS BHU वाराणसी से। स्वागतम मैडम। हर वक्ता के लिए समय 10 से 15 मिनट का है, जिससे हम फास्टनेस बनाए रखें। क्योंकि एक दिन में हम 3 वेबिनार करते हैं। बस आशीर्वाद चाहिए। यू आर co-host and can share anything I am doing. Let me start, sir. Yes, you welcome, madam. Thank you, sir. So could I share my slides? Sure. You should. You are co-host, you can do anything. In the meantime, I welcome Dr. Vidya Narayan also. Vidya Narayan ji, welcome. Yes, your slides are shared. You can go for slideshow, madam. Thank you very much, sir, for the warm welcome. Thank you, sir. Thank you, Dr. Pawan Kumar, sir. And special thanks to Professor V.K. Agnihotri, sir, and for inviting me on this important platform. कितना आज कौन सा नंबर का सर सेमिनार है? 500 नहीं 756 694 94 and 95 today. चलिए बढ़िया। 700 day after tomorrow. तो इसमें आज हमारा भी योगदान हो रहा है आप लोगों की वजह से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर मैं सुन लेती हूँ, पर थोड़ा सा टाइम की बाध्यता रहती है ये डिनर टाइम की वजह से, लेकिन आज टॉपिक ऐसा था कि तो मुझे लगा कि मुझे जरूर बोलना चाहिए इसमें कुछ, इसलिए मैंने ये टॉपिक अपनी चॉइस से सर को दिया था कि मुझे इस पे बोलना है। बाकी तो ये स्लाइड्स तो मैंने एक बनाई है, जो भी है एक स्वागत है। हाँ, आपका स्वागत है। बाकी मेन तो जो है जो हमारे मन से निकलता है वो अलग से आएगा पीछे से, है ना। तो यहाँ पे आज जो हम लोग फीमेल हेल्थ की बात कर रहे हैं और हेल्थ एंड वेलनेस ऑफ फीमेल्स, जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि फीमेल्स आर द बैकबोन ऑफ ऑल फैमिलीज एंड नो डाउट सोसाइटी ऑल्सो। कि अगर एक फैमिली में अगर फीमेल में ही डिस्टर्बेंस आ गया, आइदर उसके हेल्थ फिजिकल हेल्थ में या मेंटल हेल्थ में डिस्टर्बेंस आ गया, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। इनफैक्ट किसी भी फैमिली मेंबर के ऊपर अगर ऐसा प्रॉब्लम आती है तो फैमिली डिस्टर्ब होती है। लेकिन फीमेल जो है वो जैसे हमारी बॉडी में एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उस तरह से हम अगर फीमेल को मान लें एक परिवार में, क्योंकि फीमेल के जो रोल्स हैं वो बहुत सारे हैं। बचपन में पैदा होते ही वो फिर एक बेटी है, फिर उसके बाद जो है वो माँ बनी, और फिर उसके बाद एक वाइफ बनने के बाद फिर माँ बनी, फिर माँ के बाद फिर उसके बाद उसके सारे आगे आगे ग्रैंड मदर, तो सारे रिलेशंस उसके जो हैं वो रहते हैं। उसके फीमेल को हर रोल, हर एंगल पे रोल प्ले करना पड़ता है, तो उसको किस तरह से सबको समेट के रखना है, ये एक फीमेल का उसमें बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह से फैमिली को, पूरे रिलेटिव्स को कैसे समेट के रखना है, उसका बहुत बड़ा रोल है। उसके लिए उसका अगर फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ और साथ साथ सोशल हेल्थ भी उसका मेंटेन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे खाली फिजिकल हेल्थ की बात ना करके मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ और एंड लास्टली नो डाउट स्पिरिचुअल हेल्थ की भी बात करते हैं। तो ऑल डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, all dimensions of health should be maintained and promoted of a healthy female.
फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल शुड बी हेल्दी एंड देयर हेल्थ शुड बी मेंटेन। तो वो कैसे करना है उसके लिए तो पहले सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तभी हम लोग कितने भी एडवांस हो जाए लेकिन कहीं ना कहीं एक कोने में बैठा रहता है कि हाँ लड़का होगा कि लड़की होगी, कितने भी हम लोग एडवांस हो जाए तो। लेकिन अब कहीं कहीं तो सिंगल चाइल्ड इतना एडवांस हो गए हैं, सब लोग अवेयर हो गए हैं। तो सिंगल चाइल्ड है तो चलो नहीं एक लड़की भी है तो मतलब सब तरह की सोसाइटी में लोग हैं, सब तरह के थिंकिंग के लोग हैं। उसको जल्दी से, पहले से तो बहुत चेंजेस आ गए लेकिन पहले के जमाने में तो कितना प्रॉब्लम थी। तो इस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है और लड़कियों का सम्मान भी मिल रहा है। पहले के जमाने में जब हम लोग छोटे थे तो उस समय होता था कि कोई फीमेल हम लोग नहीं देखते थे रोड्स पे कि साइकिल चला रही हैं एक्सेप्ट साइकिल। तो अगर किसी ने, उस समय मेरी ही एल्डर सिस्टर्स थी जो वो लोग स्कूटर चलाने लगी लखनऊ में, तो उस समय होता था कि सब लोग खड़े होकर देख रहे होते थे कि अरे लेडीज जो है वो स्कूटर टू व्हीलर चला के जा रही हैं। तो अब के जमाने में तो पायलट भी हैं और कहाँ नहीं है फीमेल्स के इस फील्ड में नहीं है। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हैं और नो डाउट ये भी एक हेल्थ का पैरामीटर ही है, इकोनॉमिकल और vocational dimension. This is called vocational or occupational dimension of health. So all these dimensions of health are upgraded and promoted in the present era. बट ये तो एक सेक्टर हो गया जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है बहुत सारी जगहों पे जो लोअर फाइनेंशियल स्टेटस में है। आपकी स्लाइड्स मूव नहीं हो रही है मैडम। सर वो अभी मैं उसकी बात करूंगी, अभी पहले मैं थोड़ा 15 मिनट्स है टोटल। हाँ मैं बता दूंगी उतनी देर में सर, फटाफट बता दूंगी, है ना। 5 मिनट में स्लाइड्स कर दूंगी। स्लाइड्स पे ज्यादा जोर नहीं देना है, उसमें मैंने लिखा है जो उसको क्या बताना है, वो तो उसको पढ़ूंगी तो क्या मजा आएगा सर। जय हो जय हो जय। मैं मैं सर ये बताना चाहती हूँ कि जो फीमेल्स हैं उनको किस तरह से सम्मान मिलना चाहिए और उस चाहे वो घर में हो चाहे वो अपने वर्क प्लेस पे हो, उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार हैं। चाहे बचपन से तो उनको जो पाला पोसा गया, तो जिस तरह से मदर ने और पेरेंट्स ने उनको पाला पोसा, उसके बाद जैसे जैसे होश आता है तो लड़कियां अपने को एक गरिमा में जो है जीवन उनको जीना चाहिए कि किस तरह से उनकी गरिमा मेंटेन रहे। और उनका सबसे पहले तो उनकी पढ़ाई, पहले तो पुराने जमाने में था कि लड़कों को पढ़ा दो लड़कियों को नहीं पढ़ाओ, लेकिन अब ऐसा नहीं है, लड़कियां भी पढ़ रही हैं और बराबर क्या बल्कि आजकल देख रहे हैं हम लोग क्लासरूम्स में कि लड़कियों की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि उनकी स्टडीज अच्छी हो और उसके साथ साथ वो उनको जो जितना भी फाइनेंशियल जो है वो भी इक्वल शेयरिंग हो, कि लड़कों को ज्यादा जेब खर्च मिल गई लड़कियों को नहीं मिली। तो फाइनेंशियल और साथ साथ जो है आपका एजुकेशन, ये सारे सेक्टर्स उनके अच्छे हों। लेकिन ये सब तो पेरेंट्स देंगे, अब लड़कियों को क्या करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा सेल्फ मैनेजमेंट कैसा। तो लड़कियों को जब वर्क प्लेस मीन्स जब हम एडल्ट हैं तो हम स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, उसके बाद फिर हम जब जॉब में जा रहे हैं तो वो सारे वर्क प्लेस के स्टेटस बदलते रहेंगे। तो उसके लिए जो फीमेल्स हैं उनको अपनी, सबसे पहले एक ही वर्ड में बार बार बोल रही हूँ कि अपनी गरिमा मेंटेन रखनी होगी। आपको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए बीइंग अ फीमेल, कि आप किस तरह से किसी की, हम कहते हैं ना कि लड़के जो है वो परेशान करते हैं लड़कियों को, हम तो कहेंगे कि लड़कियां इस तरह से बिहेव ना करें कि लड़के उनको परेशान करने की हिम्मत कर पाए। तो लड़कियों को इतना मजबूत बनना चाहिए कि वो लड़कों की इतनी हिम्मत ही ना हो कि वो उनको कुछ बोल पाए, पहली बात। दूसरी बात, हम अगर लड़कियों को तो इस तरह स्ट्रांग बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने घर के लड़कों को भी ये शिक्षा दें कि बेटा जिस तरह से आप समाज में उठ बैठ रहे हो तो जो फीमेल्स हैं उनके साथ कैसे सम्मान के साथ व्यवहार करना है, तो वो सब भी हम उनको शिक्षा देंगे। तो इस तरह से एक अच्छा समाज बनेगा और हमारा जो सोशल हेल्थ है वो अच्छी होगी। तो ये एक जनरल बातें मैं बताना चाह रही थी। ये तो वर्क प्लेस की बात होगी, साथ ही साथ घर में भी इसी तरह से कि सिमिलर मेल फीमेल्स में जो है डिस्पैरिटी ना हो। तो ये सारी एक जनरल बातें थी। आई थिंक ये तो इसके लिए सभी लोग एग्रीड होंगे। तो जो समाज में किस तरह से हम महिलाओं को सम्मान दे पाए और महिलाएं खुद अपने लिए सम्मान अर्जित कर पाए, ये 2 पॉइंट्स में बताना चाह रहे थे। तो अब मैं अपनी स्लाइड्स पे आ जाती हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ योग से रिलेटेड पॉइंट्स लिए हैं इसमें।
और मेनली जो है फीमेल्स के जो 3 लाइफ की स्टेजेस हैं, एडोलेसेंट एज, देन प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग एडोलेसेंट एज। तो कौन कौन से योगिक प्रैक्टिसेस हमें मेनली करने चाहिए जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, उस पर आ जाते हैं हम लोग। मैंने जनरल बातें लिख रखी हैं। Everybody know that women have lower mortality and longer life expectancy as compared to men in all ages. But epidemiological study shows that women report more chronic diseases and disabilities as compared to males. And hence we have to promote the health of women, and healthy lifestyle is very important. And in healthy lifestyle, dietary habits, daily routine, and no doubt yogic practices are the part and parcel of healthy lifestyle. हम फीमेल्स क्या करते हैं, दिन भर खटते हैं, चाहे हम अपने सुबह से उठ के अपने घर के कामों में लगेंगे, फिर हम ड्यूटी जाएंगे, फिर आके फिर हम फिर से उसी चक्की में चलते हैं हम। ये हमने अपनी रूटीन खुद ऐसा बना रखा है। तो हमें करना क्या है, एक ही बात है कि हमें कुछ थोड़ी सी मिनट्स, कुछ घंटे या आधा घंटा भी हमें अपने लिए देना है, जिससे कि हम उस पे अपने लिए, हम नो डाउट खाना खाने जब हम बैठते हैं तो वो भी तो हम 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए देते हैं। उसी तरह से हम दिन भर में कुछ मिनट्स, कुछ आधा घंटा, 15 मिनट में तो नहीं हो पाएगा, आधे घंटे से 45 मिनट अपने लिए निकालें, जिसमें हम कुछ योगिक प्रैक्टिसेस कर पाए जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हो, फीमेल्स के लिए। तो ये 3 स्टेजेस ऑफ फीमेल लाइफ है। एडोलेसेंट एज में, मतलब जो मेन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एजेस, और स्टेजेस तो और है, चाइल्डहुड भी है, लेकिन हम मेनली एडोलेसेंट, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ एंड मेनोपॉज, इन स्टेजेस की बात करेंगे कि कैसे फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस इनमें आते हैं, इन स्टेजेस में आते हैं। एवरीबॉडी नोज कि एडोलेसेंट एज में, प्यूबर्टी एज में कैसे हार्मोनल चेंजेस होने से फीमेल्स में जो है वो बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ उसका इम्पैक्ट जो है हमारी साइकोलॉजी पे भी पड़ता है। तो कैसे एक फीमेल को जो है अपनी मदर के साथ किस तरह से उसको लर्निंग मिलती है कि किस तरह से हमें डेली रूटीन करना है, चाहे वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो या मेंस्ट्रुअल प्यूबर्टी एज हो, तो उस सब में वो अपनी मदर से लर्न करती हैं या अपनी कोई बड़ी सिस्टर है उनसे लर्न करती हैं। तो उस सब में कैसे उसको, कई लोग तो उसी स्टेज में ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उससे कैसे कोप अप करना है अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है तो वो सारी चीजों के लिए एक हमारा जो योग की प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत अच्छे से हेल्पफुल होती है, जो कि हमारी एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव पैथी है, जिसमें हमें कुछ पैसा नहीं लगाना है। एक बार सीख लिया और उसे हम डेली कर सकते हैं, और उसके खाली ये नहीं कि हमें कुछ एक ही बेनिफिट हो रहा है कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी, बाकी ओवरऑल हेल्थ भी हमारी इम्प्रूव करती है उससे। तो अभी हम स्टेज वाइज आ जाते हैं, जैसे कि एडोलेसेंट एज में हमें यूजुअली जो है वी एक्सपीरियंस बट इन सम द बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस इंक्रीज द रिस्क फॉर सम साइकोपैथोलॉजीज लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी एक्सेट्रा। तो यही बातें मैंने अभी बात कर ली। इसके साथ साथ एडोलेसेंट एज में जब हमें डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम होती है तो साथ ही साथ हमें जो है वोमिटिंग, नोजिया, फैटिग और लो बैक एक and even headache etc also going on along with dysmenorrhea. So this is called premenstrual syndrome also. And to cope up with these problems, various yogic practices are required, like during menstruation and before and after menstruation. ये 2 चीजों में हम कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड हमें कुछ हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, सभी को पता है। तो बिफोर एंड आफ्टर मीन्स इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड में जो है हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें योगिक प्रैक्टिसेस तो मैंने यहाँ लिखी हैं जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो आसन और प्राणायाम से पहले जब हम अष्टांग योग पढ़ते हैं तो यम नियम से शुरू करते हैं। तो वहाँ पे वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, क्योंकि यम नियम हम किसी को दिखा नहीं सकते हैं, खुद हमें अपनी लाइफस्टाइल में लाना है। यम में आता है अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो ये सारा हमें अपनी लाइफस्टाइल में मेंटेन रखना है, जिससे कि हम अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ को अच्छा रख पाएंगे। इसके बाद हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए जिससे कि हमारा जो है
जितना भी कंजेशन है वो दूर रहे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, स्पेशली जो जेनेटेलियाज में। उसके लिए मैंने कुछ आसन यहाँ पे बताए हैं, जैसे कि ताड़ासन है, हस्तोत्थान आसन है या त्रिकोण आसन है। यहाँ पे मैंने वो आसन चूज करे हैं जो कि ओवरऑल बॉडी के एवरी बॉडी पार्ट को जो है वो रेगुलेट करेगा, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो और साथ ही साथ हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो उनकी फंक्शनिंग नॉर्मल हो। जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग के कुछ आसन रखे हैं, कुछ जैसे ताड़ासन अपवर्ड स्ट्रेचिंग का हो गया, देन त्रिकोण आसन लैटरल बेंडिंग का हो गया। इसी तरह से धनुरासन जो है वो बैकवर्ड बेंडिंग, और भुजंगासन भी बैकवर्ड बेंडिंग के लिए है, और शवासन इज फॉर डीप रिलैक्सेशन। Then after asanas, we have to practice pranayam also, like Anulom Vilom or Nadi Shodhan pranayam. And Kapalbhati is also very beneficial in case of adolescent health. And after the practice of pranayam, meditation is also very essential, because without meditation, the overall effect of yoga is not resulted in our body, because we have to get the effect on spiritual health also. So meditation is also important in daily routine. Maybe 15 मिनट भी अगर हम डेली मेडिटेशन करें तो वो अच्छा है हमारे लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। अगर हम कहते हैं कि ग्लोबल पीस की बात करते हैं, तो ग्लोबल पीस के लिए हमें पहले खुद शांत होना होगा, फिर हम दुनिया को अपना व्यवहार के द्वारा हम बता सकते हैं कि किस तरह से रहना है। उसमें मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। Now we come to the yogic practices during menstruation. तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान हम कोई हैवी प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, तो उस समय हम ताड़ासन कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, या भुजंगासन भी कर सकते हैं। और मार्जारी आसन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि हमारे यूट्राइन एरिया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे सर्कुलेशन अच्छा होता है। एंड पवन मुक्तासन एंड शवासन इज आल्सो कैन बी डन, एंड अगेन अनुलोम विलोम एंड मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट। Now we come to the other stage like pregnancy and yoga during pregnancy. We all know that pregnancy is a normal physiological changes in our body, and anatomical and physiological changes will be there, and it is also associated with nausea, vomiting, hyperacidity, constipation, backache, and some yogic practices are beneficial to remove the low backache and constipation also, but we have to take care of womb or pregnancy. So during different trimesters, first trimester, second and third trimester, we have to take care and advise for different yogic practices. Here I have listed the common yogic practices that would be very beneficial during pregnancy. Again, Tadasan, Hastottanasana. Here I have written Titli Asana or butterfly pose, maybe by one leg like Ardh-Titli Asana, or by both legs Poon-Titli Asana. Then Supta Udarkarshan Asana is also very important. At the last of this PPT, I will show the pictures of these asanas also. So, and Marjari Asana and Matsya Asana. These are very beneficial for relaxation and blood circulation in the uterine organ, uterine area, and uterus and adnexa. And now we come to the last stage of, later stage of, not last stage, later stage of female, like menopause. And what are the importance of yoga in these stages? Because we know that menopause is also very sensitive stage, and there are various hormonal changes in this stage. So again, the female suffers from various psychological changes and stress also. In fact, irregular menstruation or heavy menstruation also is a big problem in the society. So this irregularity of menstruation can be cope up with the practice of yoga also, and by removing the stress and by balancing the sleep also, we can manage the menopausal syndrome. So for this, because this is the later stage of females, so we could not advise for heavy yogic practices, and forward bending is also usually contraindicated, because in old age low backache is very common in females, and vitamin D is also very low as compared to males, not very low, but as compared to males. In females, vitamin D and calcium problem is also there. So forward bending is usually we not recommend, and
Yes, 2 minutes also. So Ardhitli Asan and Suptudakarshan Asan, Udarkarshan Asan and Marjari Asan and Matskudarshan are also. Sorry, this is for pregnancy. And now we come to during menopause. Yes, during menopause, like Ardh Matsyendrasan and Dhanurasan, and then Pavan Muktasan is also important because it removes the Vatas disorder also. And the Brahmari Pranayam is for peace of mind also. It is also very good during menopausal syndrome. So lastly, I am showing the pictures here, like Ardha Titli Asan by one leg, half butterfly, by both legs, full butterfly pose, Purn Titli Asan. Then this is Suptudakarshan Asan, legs are on one side and our face on opposite side. This is Suptudakarshan Asan. Removes the constipation. These are the benefits I have written here. And this is about the cat stretch pose, Marjari Asan. It is very good for during pregnancy because it removes the pressure on abdominal aorta. So it is good in the preeclampsia cases also. And this is Kati Chakrasan, twisting of abdominal organs and abdominal area. This is Tadasan, everybody knows. This is Matsya Kridasan, flapping fish pose. It is good for relaxation. So, but in case of third trimester of pregnancy, it is avoided. And in lateral pose, we can advise to sleep. This is Vajrasan, can be done after fooding also to improve the digestion. This is Hasuttanasana. Thank you, sir. I think I am within time. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत Thank you सुंदर. very much. आपने you have comprised everything, madam, excellent. Thank you, sir. आज से मंच आपका है. आप जो चाहें पूरे महीने का प्रोग्राम हम लोग 1 तारीख के पहले सर्कुलेट करते हैं. आप जिस पर चाहें और जिसको रिकमेंड करना चाहें, ये मंच आप लोगों का है. लेकिन ना आपका टाइम बड़ा खराब है, इसलिए मैं ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर 8 बजे से 11 बजे तक चलती है मैडम. 11 बजे तक 3 वेबिनार. जी जी. 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, कोई सा आप भी लोग तो टाइम. आप लोग तो डिनर करके आए होंगे, तो अभी तो हमें तो करवाना भी है, करना भी है. आदरणीय अग्निहोत्री जी. थैंक यू वेरी मच सर. आदरणीय अग्निहोत्री सर. नमस्कार, नमस्कार. आप तो आज दे रहे हैं इनको ये प्लेटफॉर्म. मैं तो 3 साल दे रखा हूँ. ये प्लेटफॉर्म आज से आपका नहीं है, विगत 3 वर्षों से आप कभी कभी इरेगुलर हो जाती, नहीं जुड़ती हैं. और आज जो प्रोफेसर पवन शर्मा ने बात कही है कि आप रोज जुड़िए, जब जुड़िए, और उसमें एक सेंटेंस और बढ़ा दे रहे हैं, आप जिसको जोड़ना चाहें जोड़िए, जिसको न जोड़ना चाहें न जोड़. वो अर्थापत्ति में आ गया. अर्थापत्ति में आ गया, इसलिए वो फिर भी हमने कह दिया. तो आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया. मैं तो अभी लास्ट स्लाइड्स देख पाए आपके, बहुत ही अच्छे. आपने उसको मैंने योगासन से भी आप जोड़ दिया वीमेन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. बहुत अच्छा. ये तो हमें इट वाज मोस्ट एक्सपेक्टेड दैट व्हेन यू स्पीक एट योर लेवल, बिकॉज यू बिलोंग टू वन लेवल ऑफ स्टेटस दैट यू प्रूव टुडे. पता चलना चाहिए ना सर, पता चलना चाहिए कि आपके जूनियर हैं, आप PHU एलिमनाई और आपके जूनियर हम हैं, ये तो पता चलना चाहिए ना. ये तो हम नहीं कहने पे हमें शोभा मिल रही है. हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष के स्टेटस को मेंटेन किए हुए. तो हमारे लिए गौरव की बात यह है. हमारी उपलब्धि दूसरी, आप दूसरे ढंग से ले रहे हैं. एक दिन हर कोई जूनियर होता है, छात्र होता है. मैं आप पर गर्व करता हूँ और गर्व इस बात पर करता हूँ कि आप जैसा हम चाहते हैं वैसा आप बता देते हैं, वैसा आप प्रेजेंट करते हैं. ये मेरे लिए खुशी की बात. बहुत बहुत शुक्रिया. आइंदा भी जुड़ा करिए, आइंदा जुड़े रहिए. धन्यवाद. मैं अब आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर लीना ननोटी जी को आमंत्रित करता हूं. वो प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर एंड HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स में, BDM कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा झज्जर. स्वागतम मैडम, स्वागतम. नमस्कार सर. नमस्कार जी.
नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवम् सुरासुरैर्वन्दित पादपद्मम् लोके जरार्भयमृत्युनाशम् धातारमीशम् विविधौषधीनाम् ओम शांति 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 ओम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to congratulate AYUSH SAMRIDDHI group for organizing this international webinar seminar. I am really very happy and feeling blessed to be over here. And as we all know that tomorrow we will be celebrating this Women's Wellness Day, International Women's Wellness Day. And it was the right time to join you people all, and I am feeling really blessed. Thank you so much, Professor Pawan Sharma ji. This is the first time it's our interaction, and very nice meeting to you. Professor Vishnu Sharma ji, Professor Agnihotri ji, Ma'am Neeru ma'am, and of course all the dignitaries, those who have joined online over here. Thank you so much. But before I say something, सबसे पहले मैं अग्निहोत्री सर का और फिर आपकी माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि मैंने इस वेबिनार को कुछ और समझा. Basically, I got misunderstood. I thought that it is only for lay persons. मैं नहीं जानती थी कि मुझे डॉक्टर्स के सामने बोलना है. मुझे ये लगा था कि it is only for the lay persons. So, और इसलिए ये slides and everything, मतलब it was a real misunderstanding, and I really feeling very sorry for that. मैं क्यों लेके यहाँ पे आई थी. ये आपका मंच है मैडम, इसमें कोई सॉरी नहीं है. आपका ज्ञान है और केवल ज्ञान का आशीर्वाद चाहता हूं. इनका चश्मा के कार में ही है. स्टीयरिंग बगल में होगा. हो गई कि मैं अग्निहोत्री सर से ज्यादा बात नहीं कर पाई, और मुझे ये लगा कि ये जो सेमिनार, मोस्टली वेबिनार्स और सेमिनार रहते हैं, उसमें एक आम आदमी जुड़ता है, तो शायद ऐसे पॉइंट्स में लेके आई कि जिसका कोई आयुर्वेद से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है. बट स्टिल, एज यू हैव गिवन मी दिस प्लेटफॉर्म, डेफिनेटली 10 मिनट ही सही मैं अपने व्यूज इसमें जरूर रखना चाहूंगी. एंड आई विल बी मच बेटर नेक्स्ट टाइम. आई प्रॉमिस यू कि कुछ और टॉपिक जब हम लेंगे तो डेफिनेटली मैं आपसे जुड़ना चाहूंगी. दिल की बात बोलूं, आप जो बना के लाए हैं वो हमारे लिए आशीर्वाद है. बना के ही नहीं लाई. द प्रॉब्लम इज दैट. तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम. Anyways, we are going to mark tomorrow for the wellness. First of all, मैडम ने इतना अच्छा बोला है. थैंक यू सो मच मैम. और मैंने पहली बार मैम से ही सुना है, तो आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड. मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वेलनेस क्या है. वेलनेस एक पूरा पैकेज है, ऐसा मुझे लगता है. इट्स अ पैकेज ऑफ हेल्थ, इट्स अ पैकेज ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज अ पैकेज ऑफ माइंडफुलनेस, इट्स अ पैकेज ऑफ स्लीप एंड वर्क, एवरीथिंग. और हम जिस एरा में हैं, मुझे लगता है कि हमें बचपन से ये सिखाया गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ति देवताः. हम ये सोच के ही निकले हैं कि नारी की पूजा की जाए, वहां पर ईश्वर का वास है. पर आज मैं कह सकती हूँ कि 50 एज मेरी हो चुकी है, तो मैं इतने सालों से जो देख रही हूँ कि आध्यात्मिक घर से आई हूँ जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है, तो मैं माँ सीता की बात करूं या सरस्वती की बात करूं, रानी लक्ष्मीबाई की बात करूं, सरोजिनी नायडू की बात करूं, इंदिरा गांधी की बात करूं या दीपिका पादुकोण की बात करूं, हर स्त्री पहले एक इंसान है. ये हमने समझना चाहिए. वो देवता है कि वो पॉलिटिशियन है कि वो कलाकार है, इसके अलावा वो स्त्री है. स्त्री से पहले एक इंसान है. और हम जब ये बात करते हैं उसके वेलनेस की, तो उसके वेलनेस के साथ हमने ये देखना चाहिए कि उस स्त्री के कोई इच्छाएं हो सकती है, कोई आकांक्षाएं हो सकती है, उसे भी दुख हो सकता है, उसे भी तकलीफें हो सकती है, उसको भी आराम की जरूरत है, उसको प्रेम की जरूरत है, उसको सम्मान की जरूरत है, उसे भी किसी स्ट्रेस में वो हो सकती है. तो ये चीजें देखते हुए जब हम ये विमेन वेलनेस डे जो मनाते हैं या मनाते आ रहे हैं या आगे भी मनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है
कि first of all women should be encouraged to make themselves priority and focus on their health and their well-being. There are n number of issues for housemaker, homemakers, जिसे हम पहले housewives कहते थे, पर आज हम उसको housemakers कहेंगे. Or on the workplace, they are suffering from n number of ailments like cardiovascular disease, breast cancer, cervical cancers, chronic ailments like diabetes, BP, even मानसिक बीमारियां जो डिप्रेशन है या चाइल्डहुड अब्यूज है. इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक सुपरफिशियल एक बना के रखा है समाज में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बहुत ऊपर तक उसको ले जाओ, या घर में यदि बहू है या भाभी है या बेटी है उसको हमने पढ़ा दिया, उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई, तो दैट इज द वेलनेस फॉर अस. आई डोंट थिंक सो. हम कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव. साल में यदि एक बार माँ की पूजा की और साल भर माँ की तरफ देखा नहीं, तो दैट इज द टोटल फेल्योर, आई मस्ट से. इन द सेम वे यदि हम वेलनेस की बात करते हैं तो उसके शारीरिक, मानसिक, सोशल स्टेटस की हमने बात करनी चाहिए. और जब तक हम उसकी बात नहीं करते, आज वायलेंस है, फीमेल फिटिसाइड है, उनको हेल्थ केयर नहीं दी जा रही है, एजुकेशन ठीक से नहीं हो रहा है. हम 1% लोगों को देखते हैं जो अच्छे एजुकेटेड लेडीज है, अदरवाइज अभी भी कंडीशन जो हमारे समाज की है वो इतनी अच्छी नहीं है. सो द बेसिक थिंग इज इट हेल्प्स ट्रांसफॉर्म लाइव्स, encourage women to maintain their health. It promotes better health care. जब हम एक स्त्री की बात करते हैं, उसके हेल्थ की बात करते हैं, इफ यू चेक द हेल्थ ऑफ वन वुमन, यू चेक द हेल्थ ऑफ अ सोसाइटी. ये चीज हमने एज अ मेडिको हमने ये ध्यान में रखनी चाहिए कि हर स्त्री का चेकअप जो है सिर्फ फिजिकल नहीं, मानसिक पर भी. एंड आई वुड लाइक टू से कि मेरी पीएचडी मैं कर रही हूँ अभी गवर्नमेंट कॉलेज से, रीवा से, और वहां पे मैंने टॉपिक ही लिया है स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग वुमन एंड सत्वावजय चिकित्सा. इसलिए जब सर ने मुझे कहा तो मैंने इमीडिएटली एक्सेप्ट किया कि सत्वावजय चिकित्सा से स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है वर्किंग वुमन में. और मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो मैं रहूंगी, पहले नंबर का जो उसमें फॉर्म रहेगा, बिकॉज वी ऑल आर. हम किस पोस्ट पे है? फ्रॉम लास्ट 13 years आई एम ऑन द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल. मैं देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि वर्किंग प्लेस इज मच हार्डर देन अवर होम एटमोस्फियर. घर में शायद तुम्हें कोई समझ पाएगा, लेकिन वर्क प्लेस पे तुम्हें कोई भी समझने वाला नहीं है. तो वहां पर एक अच्छा दर्जा देना, वहां पे उसकी मानसिकता को समझना. और आज जो एक सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू फिल्म इंडस्ट्री और मे बी लाइक दैट, हमें ऐसा लगता है या स्त्रियों को ऐसा लगता है, महिलाओं को ये लगता है कि हेल्दी वुमन इज ऑल्सो गेटिंग ऑन अ स्केल. वेट कितना है देख लो, वेस्ट लाइन कितनी है देख लो. दीज डोंट मैटर जब तक आप मन से स्वस्थ नहीं है. और आपकी यदि कमर 24 है कि 26 है, आई एम सॉरी टू से, इससे कोई भी आपके लाइफ में फर्क नहीं पड़ेगा. नर्चरिंग योरसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड उसे आप सेल्फिश मत कहिए. हम ये यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म में, हो सकता है यहाँ पे और भी लोग जुड़ेंगे, आगे जुड़ेंगे, सबके लिए कि भाई सेल्फ केयर इज ओनली द जॉगिंग. ये नहीं हो सकता. सेल्फ केयर है तो हमने 10 मिनट भगवान के सामने बैठ गए, ये सेल्फ केयर नहीं हो सकती. जब तक हम जिन बंधनों से बंधे हुए हैं, जिन विचारों के बंधनों से बंधे हुए हैं, उनसे हम जब तक छूटते नहीं है, तब तक मुझे लगता है विमेन वेलनेस का जो ये डे हम मनाते हैं वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल. आप म्यूट हो गए हैं, आप म्यूट हो गए हैं. Am I clear? Am I sorry? So मैं ये बस ज्यादा नहीं बोलूंगी. मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हम फ्लाइट में सफर करते हैं, हमेशा एयर होस्टेस कहती है कि दूसरों की मदद करने से पहले अपने आप की मदद कीजिए. इन द सेम वे मैं कहना चाहूंगी, पुट योर मास्क फर्स्ट. हम अपनी केयर यदि नहीं करेंगे, होता क्या है कि सबसे एंड में जाती है वुमन, रिजल्टिंग इन हेल्थ एंड वेल्थ डिफिकल्टीज. सो वी मस्ट taught her, teach her how to prioritize their own needs.
एंड एज अ कॉन्सिक्वेंसेस मुझे लगता है एक माँ, एक बीवी, एक पार्टनर, एक एम्प्लॉय एंड एज अ इंडिविजुअल वो खुश रहेगी तो पूरी दुनिया को वो खुश रख सकती है. सो वी रियली नीड टू मार्क दिस डेज एंड इन सोसाइटी ऑल्सो. मैं तो सर का मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे इन सारी चीजों को देख के कि हम ये ओपन प्लेटफॉर्म पे भी कभी लाए. वेबिनार्स तो है ही, पर वेबिनार्स में थोड़ा सा नंबर जो है वो कम हो जाता है. यदि हम ओपन प्लेटफॉर्म पे इन चीजों को लाए, क्योंकि आज हम जो जितनी स्त्रियां यहाँ पे जुड़ी है, दे नो एवरीथिंग. हम अपने आप को कैसे संभालें, हम लोगों को कैसे संभालें, हम घर परिवार को कैसे मैनेज करें, वर्क प्लेस में हमारे से ऊपर हमारे नीचे, चाहे वो जेंट्स हो, मेल्स फीमेल हो, कोई भी हो, वी आर रेडी टू टैकल दैट. द थिंग इज दैट इन लो सोशियो इकोनॉमिक जो लेडीज है, जो अभी पढ़ी लिखी नहीं है या पढ़ लिख के भी कहने के लिए पढ़ी है लेकिन अभी आजाद नहीं है. और मुझे लगता है कि जब लोकमान्य तिलक ने कहा था, जब स्वतंत्रता की बात आई थी, उन्होंने कहा था सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि लोगों को ये बताना है कि वो पारतंत्र में है, वो स्वतंत्र नहीं है, ये बात ही उनको पता नहीं है. ये ज्यादा मुश्किल है. फ्रीडम लेना आसान है, पर तुम्हें फ्रीडम नहीं है ये समझाना मुश्किल है. Same is the case with homemakers, same is the case with working women. We don't know that we are not free. हाथ में पैसे होना is not the freedom. कहीं शॉपिंग के लिए हम जा रहे हैं, is not the freedom. मैं अपने कोई डिसीजंस ले पा रही हूँ, they are not the freedom. The freedom is that जो मानसिक फ्रीडम हम चाहते हैं, इस लेवल पर चाहते हैं, जब तक वो हम हासिल नहीं कर सकते, तब तक हम प्रॉपर विमेन वेलनेस डे मनाया ऐसा हम मन से नहीं कह सकते. वंस अगेन आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल. मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर द फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इन सारी चीजों का एक समतोल जब तक बैलेंस एक स्त्री नहीं कर सकती, तब तक वो एक सक्सेसफुल लाइफ, सक्सेसफुल इज नॉट ओनली बाय द मनी और बाय द नेम और फेम, उसको मैं सक्सेस कभी भी नहीं कहती. सक्सेस इज कंटेनमेंट, सक्सेस इज इनर हैप्पीनेस. जब तक हम इनर हैप्पीनेस की तरफ नहीं जाते, कंटेनमेंट की तरफ नहीं जाते, विचारों का स्वातंत्र जब तक हमारे पास नहीं है, तब तक हम ये वेलनेस पूरी तरह से नहीं पा सकते. Once again, thank you so much, and next time I will be much better on the any other topic. Thank you so much, sir. सर्वे भवतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम आप शांति. इंस्पायरिंग है. आपने कहाँ गलत किया, आप तो इंस्पायरिंग है. एक्स टेम्पो भी इतना दमदार बोल गए. तो हम हर टॉपिक पर करते हैं, ये जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा साइंस या लॉजिक हो. नंबर एक. नंबर दूसरी है, यूट्यूब पे लाइव है. यदि हम अपना मैसेज जनता को भी देना चाहते हैं तो वी कैन सर्कुलेट दीज लिंक्स टू डायरेक्ट यूट्यूबर्स. Yes. I am telling you कि it was totally misunderstood. ये सही बात है कि मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने स्टाफ, अपने कलीग्स को यदि मैं देती तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा नंबर पे जुड़ सकते थे. जो मैडम का सुनते तो और ज्यादा अच्छा लगता. मैं तो सुनते सुनाती ही रहती हूँ उनको, दैट इज नॉट द बिग डील. पर बड़े बड़े लोगों का सुनना बड़ा मुश्किल से मौका मिलता है. मैम, यू आर रियली वेरी ग्रेट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. वंस अगेन थैंक यू. हम ज्ञान में तो सभी बड़े हैं अपनी अपनी जगह. नहीं, मैं तो एक बात अर्ज करना चाहता हूँ साहब. दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे. मेरे इन वेबिनार ने 2400 गुरु बनाए, जिसमें देखिए अभी मेरी ये एक यंग छोटी बहन, वो भी मेरी गुरु है, डॉक्टर विद्या नारायण फ्रॉम मैसूर. शी इज इन मैसूर एट JSS आयुर्वेदिक कॉलेज. तो मेरे को हर एज ने, राइट फ्रॉम यंग एज टू सीनियर एज ऑफ 95 ईयर्स, माय गुरुदेव प्रोफेसर हरिशंकर शर्मा जी एज ऑफ 95 ईयर्स. तो वो 95 टू 30 ईयर्स से मैंने ज्ञान पाया है. और रियली अब तो ये 3 साल का ज्ञान पाके ये इच्छा होने लगी है कि अगला जन्म भगवान आयुर्वेद में देना. मेरी 5 पीढ़ियों से मैं आयुर्वेद में हूँ. फादर यहीं डायरेक्टर थे, मदर सुपरिंटेंडेंट थी, ग्रैंडफादर राजवैद्य थे, और मेरी बेटी श्री में बेंगलोर में पढ़ रही है इस समय भी. तो मैं बस यही चाहता हूँ, मैं डॉक्टर विद्या नारायण जी को, मैं अग्निहोत्री जी को पहले 2 मिनट संक्षिप्त में, आपके बिना तो मामला अधूरा है. Thank you, Professor Pawan Sharma ji. We were very keenly listening, Professor Madam Leena ji,
And it's no matter to say sorry. Actually, our platform is running almost 3 years with all these cause. As you rightly told that this message should go to the common man, common public. Ma'am, the fact is that we started during the COVID season and we were left with no option. This was Yes, the yes, only I can tool understand. and resource. So Yes. you people are great mentor. You are directly giving the motivational speeches everywhere. Whosoever is in your contact and being enjoying the post of principal, that too of 2-3 colleges, you have done your job. We are trying to collect your message and your knowledge and spread throughout the world with the help of the YouTube. Not only today, but also when they will visit in archive, we will find right from the 01 to 7 this thing. So our displeasure. So you don't say like that. Your knowledge we got. I found that you really told, and your speech was full of emotions and the right cause, that female should feel and will feel free only then when she will realize that she is mentally sound and mentally free. This was the extract of your address. So thank you very much. And I am pleased that you accepted our invitation and you joined, you made it possible. Thank you so much. And Thank you please so much. remain attached with our this webinar again and again. Thank you so much. Over to Pawan Sharma ji. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Now I would like to request Dr. Vidya Narayana. Vidya Narayanan, welcome. Welcome. Thank you. At the outset, very warm good evening to one and all. I see a lot of senior people here in front of me, and I really appreciate and I wholeheartedly thank AYUSH SAMRIDDHI team for giving me a great opportunity to share my views regarding the wellness in women in both home and at workplace. Sir. Can I please share my screen? Your platform is yours. Yes, yes. Thank you, sir. So the topic as given to me was women wellness at home and at workplace. So this is a small view about what I'm presenting today. The introduction, I would like to talk about what is physical wellness. So we do have emotional, social, spiritual wellness. Yes. We all know the definition of Ayurveda, which says Samadosha Samagnischa Samadhatu Malakriyaha Prasannatmendriya Manaha Swastitya Bhidiyate. So this definition is very close and it resembles the definition given by the WHO and Ayurveda. We all know that thousands of years ago, and we should admit that it has emphasized all kinds of parameters, such as the anatomical parameter, the psychological, the physiological, the mental, and the spiritual well-being, as said in Ayurveda. So therefore, in Ayurveda, we all know that Ayurveda says that a healthy person or is a person who has a healthy body, samadosha samagnischa. That is, all the doshas are in normal state. That is, the physiological actions are proper. And not only physically healthy, but also mentally and spiritually is very important. So this is what the Ayurveda says. So let us understand today women's health wellness. Yes. Women's wellness refers to a state of being in good physical, mental, emotional, and social health as it pertains to women. It involves taking care of all aspects of women's well-being, including her reproductive health, nutrition, exercise, stress management, self-care, relationships, and so many more. Women's wellness also encompasses the prevention and treatment of health conditions which are very specific to women, such as breast cancer, cervical cancer, and menopause. Why I'm stressing only on cancer is
we know that cervical cancer is the only kind of cancer that can be prevented because we know the cause and there is vaccination. How many of us know that we have to get vaccinated before the active sexual life? How many of us are so much responsible so that we can vaccinate our young girl children before she enters into the actual sexual life? Therefore, I have emphasized more on breast cancer and cervical cancer, which are very common, and also menopause. That is the time when woman has to encompass her responsibility and also she has to look into her health. Overall, women's wellness is about empowering women to take control of her health and well-being, make informed decisions about her body, and lead fulfilling lives. So let us look into what this physical wellness is all about. Now, physical wellness is importance of exercise and physical activity. We know that COVID was the time when most of us were indoors, and we know how many women and how many people are suffering from actual vitamin D deficiency. It might be a very small thing, but it is one of the things that is actually causing a lot of health problems in women. Second thing is nutritious diet and healthy eating habits. Since we all are, so much fascinated about tasting and eating food, but how do we balance whether the food that we eat are just according to the calories or is it very nutritious? So this and sleep and rest. So having sufficient sleep and good amount of rest is equally important. And as doctors, we do neglect medical health checkups and regular screenings. Most of the countries have made it mandatory, especially at the age of 40 years. But medical health checkups is only mandatory for the IT professionals. How many of us are looking into this? So these four things go into the wellness, the physical wellness. Next, I would like to talk about emotional wellness. So emotional wellness is the wellness with regard to the emotions of one's emotions. So under this, how do we manage stress? Stress management and relaxation techniques. So for the management of stress, what are we doing? The relaxation techniques that we are adopting. It could be yoga, away from the screen. So relaxation techniques, I wouldn't vote for the screen time, the mobile or watching TV. No, that is not relaxation. Inward relaxation. How one can introspect oneself and find the relaxation technique. It can just be introspecting oneself. What I did throughout the day. How I can look into myself. How I can be a better person. How I can manage a certain problem. So relaxation techniques are many. I'm just highlighting the points because in 15 minutes, I just would like to highlight the important points under different wellnesses. Next is the positive relationship and the social support. Positive relationship is a relationship when you speak to a person and you get a positive kind of attitude, a positive kind of well-being. So it is not that when you see a person, oh, why did I see this person in front of me? No. So how can you turn this kind of feeling into a positive relationship? A social support. So by turning a relationship into a positive thing, you get the social support. Apart from your family, when you're going out, the social support is equally important. Next is self-care and self-compassion. So here now, self-care. Self-care is taking care of oneself. So when a woman, since I am from the Prasuti and Sri Roga background, I can only quote this example, how a woman's body gets accustomed or the physiological changes of pregnancy gradually when she comes to her postpartum care. It's very difficult for a woman to get back to her pre-pregnant state. So self-care and self-compassion. So what is self-compassion here? Please do not see yourself as an external thing. Look at your inner strength, how you can nurture your inner strength. That is the self-compassion that a woman can actually develop on. And managing mental health conditions.
most important, because women have a lot of responsibility, whether you're a doctor, whether you're a mother, whether you're a housewife, irrespective of all this, whether you're working, irrespective of all this, you're managing n number of things. You have a multifactorial role to play. So how can you manage all these things? Managing mental health, putting things in place. So managing mental health and health conditions are very important. Next is the social wellness. So under social wellness, we have a community involvement and social support network. So what is a community that we live in? So it may be the neighborhood, it may be the hospital community, it may be a friend circle, it may be a joint. I know a joint family are very rare now. Still, managing community involvement, what are you contributing as a woman? You can just nurture, you can just, you can just guide your neighbor. You can just guide your neighbor. If you are not a working woman, you can just guide your neighbor into a correct path. You can tell stories. How can you involve yourself in the community? And social support networks. There are many organizations, many NGOs that if you're really willing, you can just devote 1 hour of your time, apart from what you're doing, just devote 1 hour of your time, take away. You can actually nurture children. You can actually nurture children by telling them positive things. So this is the community involvement and social support networks that you can start developing. Next is building healthy relationships. Very important. So we know how to build healthy relationships in a workplace, but a woman who is indoors, I have made my talk to a general public. So building healthy relationships is very important. How do you build these healthy relationships? So when you're in a workplace, definitely you're bound to, but when you're not in a workplace, when you are a very much family oriented person, you do have a lot of responsibilities. You're between the four walls. So how can you build a healthy relationship? Is you can take a time off for your physical health. That is why all these things, all these wellnesses are so much interconnected. They're all interconnected. Work-life balance. Work is one side, especially when I come from Stiroga Prasuti. We do have a lot of emergencies. We might have to go out for deliveries. But how can you balance workplace? So can you just make a call? Can you just make a call after 2 hours at least and communicate with your family so that you can always give the feeling that you're connected to them? There are so many ways. This is just an example that I have given. There are so many ways that one can do this work-life balance and time management and organization. Time management is so important. When you have something to submit, why don't you finish your submissions at least 2 days prior to it? Organizing your things is so important. So when you organize just as simple breakfast, what I can make for tomorrow, what I can make for lunch, these are small nitty-gritties, but they do have a lot of impact on the woman's wellness and mental attitude. Next is the spiritual wellness. So spiritual wellness, what is spiritual wellness? We do know that spirituality is a kind of inner peace that one can get connected to something greater than oneself. We know that there is a higher power, there is nature, there is universe, and there is something beyond everything. So that is a greater power. So one has to find a meaning or a purpose of one's life. So how can we actually have the sense of personalized values? How can we feel these ethics? The sense of inner, I can say inner connectedness, and how we can connect ourselves to the world. So the understanding these and realizing these, I would call it a spiritual wellness. Practices for cultivating spiritual wellness. So you can be a very emotional person. How the spiritual foundation, can actually help you to lead into the sattva, the spiritual, the soul has to go, the atman has to go towards the sattva, not the rajas or the tamas. Finally, it is the sattvika, the sattvika bhava that one can develop. So how we can practice or cultivating the spiritual wellness. Then benefits of spiritual wellness. So
definitely once the spiritual wellness, we are able to connect with, our self and the outside thing, there are a lot of benefits with respect to the physical body as well as the mental aspect. So now let's look into wellness at home. So wellness at home, so prioritize self-care. So how often are we actually taking care of others? We do take care of others very well. But when we come to our own needs, I think we are very much neglected, even as doctors. So why don't we make time for each ourselves? We have to make time for ourselves, and also like exercising, reading, it can be meditating, or anything that, brings joy. Next is communicate your needs. So communicating what we actually want and what we do not want. Okay, so communicating needs should not affect our relationships. So this creates a healthy environment in the family. So it keeps, a kind of, I could say, reducing our stress at home, and finally prioritizing our relationships. So prioritizing relationships here actually refers to, you give more importance to your family first or your friends, or how can you balance your work and how can you balance your family? Sorry. I think I just overshot the slides. Yes, I was talking about a healthy environment, creating a healthy environment at home, maintaining a healthy diet. So maintenance of healthy diet is most important at home. Eating nourished, like I told you, it is not about calories, but eating nourished Time, food articles. please consider time also. Sure, sir. Getting enough sleep. Aim to get at least 7 to 8 hours of sleep is most important. Finally, wellness at work. So take breaks when you are actually working. Very essential. Communicate your needs. So communicating needs at workspace is equally important. So what is that you need? You want to take a break? Please communicate it. If you want to share your work, and that way it has to be vice versa. And practice self-compassion, like I told earlier, and prioritize relationships. Most important. So summary is, when women have to play many roles in the society, including as mothers, as caregivers, as professionals, and as leaders, so she has a lot of responsibility. Wellness can lead to better health, increased happiness, and it can increase the productivity. So finally, I would also like to add on that women have different roles in the society, and how we intervene oneself, how a woman can actually improvise the health requirements, addressing the underlying. It can be social, it can be economic. She's into the political field. So she's into every kind of field. Therefore, I would like to say, by working towards women's empowerment, we can create more equitable, healthier world for everyone. Thank you for giving me a great opportunity, and I really appreciate everyone for a patient hearing. Thank you very much. Thank you. You are really a motivational leader. Thank you, sir. Please do join. God bless you and all the best for your life. Our blessings are with you, but really impressive, excellent, scientifically impressive, and you can motivate anybody, definitely. God bless you. Thank you very much, sir. Thank you for giving me the opportunity. Now I would like to present fourth speaker of the day, Dr. Sikha Bostwana, Sikha Trivedi ji from Bostwana. Good evening, respected members present. All protocol observed. I am Shikha Trivedi, originating from India, now based in Botswana. Botswana is a small country in southern Africa. Currently, I am with Botswana Open University, heading the Department of Early Childhood. I wish to tender my apology to
to send the voice note because of आवाज आ रही है ना सर? आ रही है. Is it video? change in the date and time. This change has collided with my work commitment. That is why I am sending a voice note. Food for thought. Today, we are talking about Women's Wellness Day. Women's Wellness Day is a multifaceted and ongoing journey that requires attention and care. Does this mean, as a woman, we never thought about our health and wellness? Partly it is true. Women is always seen as a... If we think of a woman, we think that woman as a mother, as a sister, as a wife, as a caregiver, and so many other roles attached to it. Look at that the slide, the women with many hands. And I must say that women are in a position to handle everything at a go. They are called multitasking. It used to be better when women, they were not in the working field. But lately, women has joined outside world. They have started working, and in fact, they have taken over almost all the men's field. They are pilots, they are engineers, they are heavy load vehicle driver, they are mountaineers, as well as astronauts. You call that any field, you will find women is leading. Even in education field nowadays, if you look at the percentage of women achieving higher percentage than men, it is women. But here we are not talking, or we are not comparing, but we are talking about the wellness of women. Since the women has started working, this dual role attracted the attention of some individual, and the day was created. The day was created by Diversity Women Media in 2021 to remind women that they need to take care of themselves. I'm just repeating it again, that we have to remind women they need to take care of themselves. And the goal of this day is to bring awareness to the unique health challenges faced by women worldwide and empower them to take charge of their well-being. The word wellness is not new. It was coined in 1950 by Albert Dunn, that is an American physician, when he integrated the word well-being and fitness. And then in 2007, an American business magazine started featuring the success story of women in various fields like technology, health, finance, as well as spotlighting that their success stories of business. So the first Women's Wellness and Self-Care virtual conference is hosted by Diversity Women Media in April 29th April 2021.
Since that time, the last Friday of every year is celebrated as the World Women's Wellness Day. Colleagues, in fact, initially I wanted to talk about the women in India, since I am from that origin, and women in Africa. But because of the change of time, I have to switch my presentation, and I thought of talking about women's health from the emotional point of view. But before I talk about the emotional health of a woman, the theme of this year's day, Women's Day, is empower women to take charge of their health and well-being. Here I would like to emphasize the word empower. It means you be with them so that the women can take care of their health and well-being. This theme is broad and encompasses a wide range of health issues and concerns from different perspectives, that is from reproductive health to mental health to nutrition and fitness. I am sure that I don't need to highlight it, that women has a special consideration when it comes to the health due to the biological makeup. And we really need to talk about the health of a woman, because if the woman is healthy, the whole family is healthy and the entire nation is healthy. It is just like what we nowadays we hear, that if you educate a girl, you educate a nation. So similarly, if a woman is healthy, everyone is healthy. So in today's theme, the focus is about empowering women to make positive change in their lives and to take control of their health and well-being. I think most of the women who are present in this forum, they will agree with me, especially in India. We consider ourselves last. When it comes, even if you are not well, but if you find your family member has come home after a long day, you will still get up and try to take care of that person by offering a glass of water or a cup of tea. That is us. So here my concern here is, I think, why this day was created to keep reminding us at least once in a year that we should also think about ourselves so that it becomes in our nature. I'm not saying you should not take care of anyone in the family, but what I'm trying to say, that you also prioritize your need. And it is very important to understand women's wellness, because like I said, it refers to physical, mental and emotional health of the women. And I will be talking from the emotional point of view. Let us look at this picture. A woman is holding her head, sitting on a chair with so many question marks. It means she doesn't know what to do, where to start and where to end. This is called emotional stress. And in this condition, if a mind is just with full of thoughts, do you think so a woman will be in a position to perform? No. You see, the brain will be cluttered instead of organized. But if you are keeping your emotional well-being, it means you are organized, you are calm, and your brain can think. This means when we talk about the emotional health, it means ability to accept our feelings rather than deny them. I'm repeating again, to accept our feelings
rather than deny them. Most of us in this world, it's not only in India, I have noticed even in Africa, it happens that we deny our feelings. What does it mean, emotional health? It has major 4 characteristics. And if I explain those characteristics, you will see that if a woman is emotionally healthy, it means the family is stable. So the first characteristic is emotional stability. Resilience, the ability to bounce back. Optimism, always stay positive. And self-esteem. So if a woman has these 4 characteristics, the woman is emotionally strong, emotionally stable. And then in that condition, if the person realizes that I don't have these abilities, these characteristics, then you need to talk to someone about your emotional concern. Here I'm again saying, keeping the things to yourself, it brings anxiety. It brings many other health problems. So you as a woman, your emotional wellness is that you talk to someone about your concern. And if it is possible, you should say no. You don't need to feel guilty that you have said no to your family members. No, that was the need of the time. Feeling content most of the time, your self-esteem should be very high. You should always say, I can do it. That is emotional well-being. And also, you should have a feeling that the people surrounding you are with you. You are not alone. You can discuss, you can talk, you can lean on them. That leads to emotional wellness. And this is one of the weaknesses we have in our ladies. I know the time is not on my side. Let me just quickly talk about steps to better emotional and mental health. The first one is physical activity. You know, sometimes I find it very strange when we talk about physical activity. But as an individual, not only just as a woman, we know it is must to exercise if you want to stay healthy and fit. Because when we exercise, our bodies release stress relieving and mood boosting substances, which reduces the various risk of chronic illnesses. And also, women should take care of self. Go to the parlor. Stress management, or even if you need, you should go for counseling. There is nothing wrong if there is something bothering you and you don't find anyone around you you can talk to, you go for counseling. It is going to assist you. It will develop you. It will make you strong. And then definitely we need about healthy nutrition. But what we do at home, we are the last one to eat. And sometimes we just eat whatever is left. But here our emphasis should be, let us eat healthy nutrition, not just whatever is left, let us just eat it. And proper sleep. I don't need to emphasize about the proper sleep, that we should have at least 7 to 8 hours of sleep. How do I control my emotions, in my emotional stress? Either I read a book or do something which makes me smile or gives me pleasure, or listen to the music. And sometimes I even go for window shopping. I just move around malls aimlessly to release my stress. Because if you are stressed, you are talking to your partner or to your children or to your colleague, you will find that your tone or the pitch has a little bit gone higher. Or the best is you sit in the silence with your closed eyes. It is very important to manage your emotions. And the best is you ask
what happened right before I started feeling this way. Then state the reason you are feeling the way you are feeling. Then stop. Acknowledge that your feelings make sense. And then on that, you critically evaluate your logic before reacting. You see that emotional control. Think before you speak. And it brings many changes even in the family. And I want to end my presentation with the world's Women's Wellness Day quote. Self-care is not selfish. You cannot serve from an empty vessel. Women are nourishing power of the universe. Whoever has deep respect for women of the world will remain free from disease. That is from Amit Ray. And lastly, investing in yourself is the best investment you will ever make. It will not only improve your life, it will improve the lives of those around you. That is a quote from Robin Sharma. In conclusion, World's Women's Wellness Day is a reminder that women's health is a priority and should be taken seriously. We should go for regular medical checkups, exercise, dwell on healthy eating habits, take care of our mental and emotional health, and take charge of our wellness. Thank you very much for listening. Thank you, Dr. Shekhawat ji, Dr. Shikha Trivedi ji. Thank you very much for your message. Now, before Agnihotri ji, I would like to request Professor Ish Sharma ji for his 2 words. Professor Ish Sharma. Thank you very much, sir. And it's a delight to listen to the wonderful stalwarts, and for the first time there are very important thoughts which are very new for me, and this surely is another day for me to listen and gain as much knowledge as I can. So surely looking forward to keep benefiting. Namaskar, sir. In next webinar, we would like to have your speech on health and safety at work. Please. Sure. Just we are changing after Agnihotri sir. Thank you, Professor Pawan Sharma ji, and very guidelines and very powerful words from Professor Ish Sharma ji. So we are really sorry that we could not get your submission on today's topic. But still, as we are scared with the time, and we are one of the organizers, so we are both sides difficult to how to manage. But the fact is, Dr. Shikha Trivedi, she is of course my niece, and they are in Botswana, and I am sitting here in her uncle auntie's place. But had she been here directly, I have invited that they will see, but it was recorded. But wonderful. She was very scared, saying that how I will do. I was having a lunch hours, 15 minutes. I managed, and I asked my daughter to manage it. And I told that you will be the best of today's presentation, and that happened. What an emotional, what a crystal clear concept, and with a full, calm, peaceful, analyzing the state